Hello, everybody. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, which is abbreviated as IPEF, a new shade of the emerging world order, a new shade of the changing world. Though there are many economic associations or groupings or free trade agreements which exist in the world as on today, and Indo-Pacific Economic Framework, which has been launched very recently by the US President Joe Biden on 23rd of May 2022 on the eve of Quad Summit in Tokyo, is one such economic association which is definitely not a free trade agreement. So, as the name suggests, this association comprises the various countries from the Indo-Pacific region. So, the ultimate purpose of this economic grouping is to restrict the role of China, restrict the economic expansion of China in the Indo-Pacific region. So let us first know what is it. So it is a US-led economic group in the Indo-Pacific region formed to build fair, secure, and sustainable economies. Its ultimate aim is to contribute to regional cooperation, stability, development, and peace. So, Indo-Pacific Economic Framework is an economic grouping of the Indo-Pacific region. It is led by the US and it is there to build fair, secure, and sustainable economies and to enhance cooperation, stability, development, and peace within the Indo-Pacific region. So, US President Joe Biden proposed the Indo-Pacific Economic Framework during the East Asia Summit in October 2020. Proposal or suggestion for the formation of the Indo-Pacific Economic Framework came from the US President in 2021 during the East Asia Summit, and finally on 23rd of May 2022 it has been launched by the US President on the eve of the Quad Summit in Tokyo. So what is its purpose? So the purpose of Indo-Pacific Economic Framework is to strengthen the economies of participating countries by advancing their resilience, sustainability, inclusiveness, growth, fairness, and competitiveness. Resilient, an economy is said to be resilient if it is flexible and stronger enough to withstand the emerging changes in the world. Sustainability, an economy is said to be sustainable if it is resilient if the rate of consumption of economic resources is less than or at least equal to the rate of replenishment of the resources, and if the emission rate or the global warming rate is within the limits, so that economy is said to be a sustainable economy. Inclusive, an economy is said to be inclusive if it is based on the concept of participation. That means everybody in the economy is allowed to participate in the economic activities, and equity if the economic opportunities can be accessed by each and everybody in the economy
without any discrimination or bias. And growth. So, growth means enhancing the production of goods and services for the well being of individuals and various units existing in the economy. Fairness. An economy is said to be fair if it is built around values of or built around human values, ethical practices, and justice. So, such an economy is known as a fair economy, and competitiveness, you know about it. So, the purpose, in nutshell, of the Indo-Pacific Economic Framework is to strengthen the resilience, sustainability, inclusiveness, growth, fairness, and competitiveness of the economies of the participating countries in this framework. Members. So, at present, there are 14 members to the Indo-Pacific Economic Framework. At the time of its formation, there were 13 members, plus Fiji, which joined a few days after the launch of the Indo-Pacific Economic Framework, is the 14th member to this framework. So, out of the 14 members, 10 members are from Asia. Which are those 10 members from Asia? Those are India, South Korea, Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, and Vietnam. And one member from North America, that is the US, and three members from Oceania. So, what are those three members? Which are those three members? Sorry. Those are Australia, New Zealand, and Fiji. So, the total members as on today are 14 members. Okay, so this is there. Next is 5 countries which are absent from this Indo-Pacific Economic Framework. One is China, second is Cambodia, third is Laos, fourth is Myanmar, and fifth one is Taiwan. So these are the 5 countries which are absent from this Indo-Pacific Economic Framework. They have not been included in the Indo-Pacific Economic Framework. So China's absence from this economic association seems very much natural, because I have told earlier that this framework is actually aimed at China. Its purpose is to counter China. Its purpose is to restrict the economic expansion of China in the Indo-Pacific region. And the 3 countries, that is Cambodia, Laos, and Vietnam, are not there in the Indo-Pacific Economic Framework because these 3 are the close allies of China. Even according to the reports these days that China is building a military base in Cambodia, as it has already built a military base in Djibouti in Africa. So Taiwan has been kept out of the Indo-Pacific Economic Framework, seeing the sensitivities of China towards it. So next, there are 4 pillars of the Indo-Pacific Economic Framework. 4 pillars, or we can say these are the 4 modules of the Indo-Pacific Economic Framework. Okay. So one module is trade, second is supply chain resilience, third is clean energy decarbonization infrastructure, and fourth is anti-tax and anti-corruption. So what is there in trade pillars? Trade pillar. It is there for the integration of the economies of the Indo-Pacific region. So what is there? The first point under it is to develop
comprehensive economic engagement with the partners, building high standard, inclusive, fair, and free trade commitments, developing fair approaches in trade and technology policy to promote sustainable and inclusive economic growth, high standard rules of the road in the digital economy, including standards on cross-border data flow and data localization. The world is becoming digital today. America is giving too much importance to the digital economy. So, in the wake of the digital economies, so exchange of information, cross-border exchange of information and data will be there. So, the biggest challenge in this week is the data security or the security of information. So, for that purpose, the various members of the Indo-Pacific Economic Framework will uh, develop or discuss the and finalize the high standard rules as far as the uh, cross-border data flows are concerned or data security is concerned, we can say. Supply chains resilience, resilient and integrated supply chains for more resilient economies. So we seek or Indo-Pacific Economic Frameworks seeks to uh, increase the resilience of economies of the region, and that that is based on the resilience on the supply chains. If the supply chains are not resilient, then the resilience of economies cannot be imagined. So that is why a important point here is the uh, resilience and integration of the supply chains. So this is important point. Anticipating threats to the supply chains, mitigation of the impact of disruption and crisis on the supply chains. Okay? सो ये जो सब हम देख रहे हैं सप्लाई चेन्स के ऊपर क्यों इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है, बिकॉज हमने इन दिनों में देखा है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक सप्लाई चेन्स got disrupted, and after that in the wake of the Ukraine Russia war, the supply chains got disrupted. So in future also such unfortunate events may happen, and there may be the geopolitical tensions, or there may be a sort of civil unrest can be there, and due to all these things or some natural disaster can be there, due to all these things the supply chains may be affected in future also. So the important thing is to increase the or enhance the resilience of the supply chains by anticipating the threats to the supply chains and by mitigating the impacts of disruption and crisis on the supply chains, mapping critical mineral supply chains, and coordinating diversification efforts. Okay, so too much dependability on one country or on a group of countries uh, is not good for the economies or for the future, can say. As we see that 85% of the need of rare earths of the world is sourced from China these days. So therefore, there is too much dependability on China as far as the rare earths are concerned, and similarly, uh, China and Russia are the major suppliers of the critical minerals as well. So therefore, the you can say the purpose of the US particularly is number one to diversify. Okay? So not remaining dependent on one country or on a group of countries uh, for the strength and sustainability of economies in the days to come. And for that purpose, the mapping of the critical mineral supply chains is important.
improving transparency, security, sustainability in supply chains. So this is there. Next is clean energy, decarbonization, and infrastructure. So pursuing high ambition targets to accelerate efforts to tackle the climate crisis, including in areas of renewable energy, carbon removal, energy efficiency standards. Because if we talk about the prosperity, if we talk about the sustainability, if we talk about the fairness, so then we cannot ignore the climate change, or we cannot ignore the aspect of emissions and global warming. So that is why Indo-Pacific Economic Framework says that the countries will work together and will pursue the high ambition targets to accelerate efforts to tackle the climate crisis. So this is one of the biggest challenges today. And to accelerate efforts to cooperate in areas of renewable energy, carbon removal, energy efficiency standards. So this is there. Adapting new measures to combat methane emissions. Methane is a gas which is having very high potential of a global warming, even higher than the carbon dioxide. Accelerating the development of clean energy technologies and building resilience to climate impacts. So clean energy technologies पे फोकस करना है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के प्रति के अगेंस्ट हमने रेजिलियंस डेवलप करनी है, सो दैट क्लाइमेट का लीस्ट इम्पैक्ट और क्लाइमेट चेंज का लीस्ट इम्पैक्ट इकोनॉमीज के ऊपर पड़े. Sharing technologies and ways for easy access to finance to meet goals outlined in the Paris Agreement. So Paris Agreement, which is the outcome of the Conference of Parties of that is a United Nations Framework Convention of Climate Change, okay? COP21 we can say. So in that one clear goal is that to restrict the increase in global warming within 2 degrees Celsius from the pre-industrial levels, and ideally it should be restricted well within the 1.5 degrees Celsius increase from the pre-industrial levels. Okay, and for that purpose the developing countries need finance. Okay, because for that purpose there is need to shift from the fossil fuels to adopt the new technologies, to adopt such technologies which are more energy efficient, or to adopt technologies for the carbon removal, etc., etc., and to take various other measures. Okay, so for that purpose the developing countries need more finance and technology also. So that is why this clause is there, sharing of technologies and ways for easy access to finance, okay, so that the goals of the Paris Agreement may be met. So next is the anti-tax and anti-corruption. So to develop a fair economy, it is very much important to enact and enforce the anti-tax and anti-corruption measures to establish fair economies. So this is required for building fair economies by enacting and enforcing the effective tax, anti-money laundering, and anti-bribery regimes to curb tax evasion, corruption in the Indo-Pacific region. Okay? So Indo-Pacific region में जो टैक्स इवेजन या करप्शन को रोकने के लिए जो भी मेंबर कंट्रीज रहेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के, वो इफेक्टिव टैक्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी ब्राइबरी लॉस हैं जो, उनको बनाएंगे, उनको एनफोर्स करेंगे. ओके, सो दैट हम फेयर इकोनॉमीज डेवलप कर सकें. सो दैट इज देयर, एंड मेजर्स टू बी टेकन
For the purpose include the exchange of tax information, criminalization of bribery in accordance with the UN standards. So इसके लिए क्या measures लेने होंगे? So one is exchange of tax information between the various member countries, and second is a criminalization of bribery in the various member countries of the Indo-Pacific Economic Framework, that is in accordance with the UN standards. So it will help in making systems more accountable and transparent and promoting fair competition. So इससे क्या होगा, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एंड फेयर कंपटीशन प्रमोट होगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फेयर इकोनॉमीज. आई एम टॉकिंग अगेन. सो कंडीशंस फॉर ज्वाइनिंग ये है कि एक कंट्री में साइन अप to join for all or any of the four pillars. Okay, so चार पिलर्स जिनकी हमने बात की, उन चारों में से कंट्री किसी एक पिलर को, दो को, तीन को या चारों को ज्वाइन कर सकता है. बट एक कंडीशन है कि इफ ए कंट्री चूज टू ज्वाइन द ट्रेड पिलर, then it has to join the all other pillars as well. Okay, and one more condition is there. So a country may choose to join any of the four pillars, but yes, all the components within a pillar are must for a country to join. Okay, let's suppose I am just explaining it. Indo-Pacific Economic Framework के अंदर चार मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 and module 4. Okay, one is trade, second is supply chain resilience, third is that is the climate change, decarbonization and infrastructure, and fourth is anti-tax and anti-bribery measures. Okay, so these are the various pillars. Okay, so in pillars के अंदर further there are various, you can say, components. Okay, component 1, component 2, component 3, component 4. Similarly, here are also various components. Okay, so one can join or a country can join any of the four pillars, 1, 2, 3, 4. Let a country choose to join pillar number 2. It means there is choice between the pillars. Okay, but if it joins pillar number 2, then it must have to join all the components under the pillar number 2. As far as the components are concerned, there is no choice between the components. Okay? So this is there. Next is why is the Indo-Pacific Economic Framework important for the US? अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने चार्ज संभाला अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप का, तो ट्रंप की जो पॉलिसी थी, दैट वाज वेरी मच प्रोटेक्टिव पॉलिसी. वो अमेरिका को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे. उनकी सोच में ये था कि अमेरिका इज़ नॉट bound to spend money for the benefit of others, or why the others should gain at the cost of America. So that is why उन्होंने बहुत सारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी अमेरिका की, उनमें से विदड्रॉ कर लिया. फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट डील में से अमेरिका ने विदड्रॉ कर लिया अंडर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सिमिलरली एट दैट टाइम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशन चल रही थी, दैट इज टीपीपी, विच इज़ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. सो ट्रम्प चूज टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ओके, विद America's withdrawal, this trans Pacific partnership fell apart. Okay, so there was no further progress on it. Okay, so अमेरिका ने इसमें से विदड्रॉ कर लिया. उसके बाद एक और इसी रीजन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो लॉन्च हुआ, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एंड अमेरिका डिडंट ज्वाइन दिस regional comprehensive economic partnership also, so America kept away from this also. So इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अमेरिका की
इंडो पैसिफिक रीजन में से विदड्रॉल की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुई, उस स्पेस को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। सो इस वजह से चाइना का जो इन्फ्लुएंस था इंडो पैसिफिक रीजन में, वो इंक्रीज हो गया, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस था जो वो रिड्यूस हो गया, वो डिक्रीज हो गया। सो अब अमेरिका के पास इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कोई इकोनॉमिक या ट्रेड स्ट्रेटजी नहीं है। दैट इज वाई अमेरिका वांट्स टू revive its position uh, through the Indo-Pacific economic framework. So this is one of the primary reasons. Second, Biden's Indo-Pacific strategy launched in February 2022 calls it a missing link in the US geostrategic leadership in the Indo-Pacific. So अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में से विदड्रॉल, टीपीपी में से विदड्रॉ करके रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन ना करके, सो जो मिस्टर जो बाइडन ने फरवरी 2022 में एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि देयर इज़ ए मिसिंग लिंक बिटवीन द इंडो पैसिफिक एंड द अमेरिका। Okay, so it is important, according to the Biden's approach, to revive that missing link today. Okay, so that is the point. Indo-Pacific region, which accounts for more than 60% of world's population and more than 60% of the global GDP, is seen as an engine of post-pandemic resilience. So Indo-Pacific region में वर्ल्ड की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल जीडीपी में 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो इस रीजन को इंजन ऑफ पोस्ट पैंडेमिक रेजिलियंस के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट every major economy has been affected by the pandemic. So now the various countries like US, the major countries like US are looking for some ground to re-establish themselves, and Indo-Pacific region is considered as a very fertile ground for this purpose. So that is the point. During the COVID pandemic, the Indo-Pacific resilience helped China to become the only major country to see positive growth. So because जैसे हमने पहले बात की है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में से विदड्रॉ करने के बाद, या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन ना करने के फैसले के बाद, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था या अमेरिका की जो प्रेजेंस थी इंडो पैसिफिक रीजन में, वो काफ़ी कम हो गई और चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज हो गई। सो लेकिन पेंडेमिक पीरियड के दौरान हमने देखा कि ऑलमोस्ट सभी मेजर इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई, चली गई, बट जो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो पॉजिटिव रही। एंड ये माना जाता है कि दिस इज़ ड्यू टू दिस रीज़न बिकॉज चाइना was dealing with the Indo-Pacific region. So Indo-Pacific region provided a boost to the Chinese economy even during the COVID pandemic also, because this region is a region of a very high potential. Okay, so that is why this point is there in this context. Okay? So next is the Indo-Pacific sports more than 3 million American jobs. So this region is a big source of employment for America and is the source of nearly 900 billion of annual FDI in the US. Since the engine of global economic growth is shifting eastward, the Indo-Pacific will gain greater importance in the future, because the engine of global economic growth
is shifting from Atlantic to the Asia today, to the Indo-Pacific today, and that is why this region is gaining importance. Indo-Pacific has a greater prominence in US foreign policy. A US absence from regional comprehensive economic partnership has reduced the ability of US firms to enter and compete in Asian markets. As I have already told that America in a way withdrew from the Indo-Pacific region during the Trump regime. Due to that, America's influence on the countries of Indo-Pacific region got reduced, and therefore America was not in capacity to influence the countries of the Indo-Pacific region to make rules or regulations in favor of the US firms or businesses. And as a result, the US firms had to suffer, and the firms didn't remain uh, competitive in the Asian markets. So this is the point here. So further, due to the lack of the congressional and public support for an free trade agreement. So the mood of the Americans today is not to uh, enter into any free trade agreement, and similarly, the Congress is not in mood to uh, push America into any free trade agreement. So it was clear to Biden that if he uh, adopts a route uh, through the Congress, then the Congress may not approve Biden's strategy of reviving the American influence in the Indo-Pacific region. So that is why Biden administration has chosen a bypass in the name of Indo-Pacific Economic Framework to reassert China's economic leadership in the region by offering deals in new areas such as digital economy, supply chain bottlenecks, and green infrastructure. Okay? तो बाइडन को ये एहसास था कि कांग्रेस इसको सपोर्ट शायद ना करे, और पब्लिक का मूड भी जो है वो किसी किस्म की ट्रेड रिलैक्सेशन के फेवर में नहीं है. सो दैट इज़ वाई बाइडन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की फॉर्म में एक अल्टरनेटिव रूट, एक बाईपास रूट अडॉप्ट किया, और 3 एरियाज, ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज में डील्स ऑफर करके सो उन्होंने कोशिश की कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की रिवाइवल कर सकें. सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. सो इज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फर्स्ट इज नो, इट इज़ नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिकॉज जितने भी ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन सभी में जो टैरिफ्स हैं उनकी या तो एलिमिनेशन होती है, कंप्लीट विदड्रॉल ऑफ द टैरिफ्स, और या टैरिफ्स को कम किया जाता है. बट इसमें ऐसी टैरिफ्स को एलिमिनेट करने की या टैरिफ्स को कम करने की बात ही नहीं है, बिकॉज अमेरिकन मूड है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट Indo-Pacific Economic Framework is neither a free trade agreement and nor it will be a free trade agreement in future. जो भी कंट्री कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहेगा वो किसी कंट्री के साथ अपना जो बायलैटरल लेवल पे कर सकता है, बट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तरफ से कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो. सो the Indo-Pacific Economic Framework has no intention of expanding market access, which is considered important for an FTA. जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अपना मार्केट एक्सेस देते हैं. ये बायलैटरल का केस है. अगर हम मल्टीलेटरल ले लेते हैं तो सभी कंट्रीज एक दूसरे को अपना मार्केट एक्सेस देते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंट्री दूसरे को अपना मार्केट एक्सेस देगा
एक्स वाई को, वाई एक्स को, एक्स जेड को, जेड एक्स को, वाई जेड को, जेड वाई को, ऐसा कुछ नहीं है। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म रहता है, बट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यूजुअली free trade agreements take decades to negotiate and go through the ratification process, which is not in the case of the Indo-Pacific Economic Framework. यूजली हम देखते हैं कि जब कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यू कैन से बनता है, तब it takes very long or it goes through very long process of negotiations, and then the ratification by the highest legislative authorities is required, that is the parliament of the country. That is required in US case, the parliament is Congress, so that is required. Okay, बट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। सो इस सब कुछ को देखते हुए हम कहते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस। तो पहले तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी की ये एक स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो मोदी जी ने क्या बोला है? इट्स ए कोलेक्टिव डिज़ायर टू मेक द इंडो पैसिफिक रीजन एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कहते हैं कि सभी कंट्रीज़ की ये कोलेक्टिव डिज़ायर है कि इंडो पैसिफिक रीजन को आने वाले दिनों में एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाया जाए। सो इट मीन्स this statement of India's Prime Minister highlights the significance of the Indo-Pacific region and that of the Indo-Pacific Economic Framework as well. Next, there is one statement of American President Joe Biden. What is that statement? The future of 21st century is going to be largely written in the Indo-Pacific. ये 21st century का जो फ्यूचर है वो लार्जली इंडो पैसिफिक में लिखा जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट आल्सो हाईलाइट्स द importance of the Indo-Pacific and obviously the significance of the Indo-Pacific economic framework. So next, Indo-Pacific economic framework countries, okay, represent more than 40% of global GDP and about 1/3 of global population. तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो 14 कंट्रीज हैं, तो वो 14 कंट्रीज जो हैं वो 40% ऑफ, मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड about 1/3 of world population is living in these 14 countries. So therefore this is considered important. It aims at boosting relations through common standards in different economic sectors. So various economic sectors में different member countries के जो relations को boost करने की बात करता है ये, by developing common standards on the basis of the common standards. So it is a platform to counter China's economic influence in the region. ये हमने already discuss कर लिया है. It will help secure global supply chains which are important for maintaining global economic order. So supply chain resilience हमने already discuss कर लिया है. It will help the US to regain economic leadership in the region. Okay, so ये भी हमने discuss कर लिया है कि because US have lost ground in this region. So now through the Indo-Pacific economic framework, the US is trying to regain its ground in this Indo-Pacific region. So next is it will ensure a free, open and inclusive Indo-Pacific region, which is the commitment of the Indo-Pacific economic framework, we can say.
Indo-Pacific is projected to be the largest contributor to global growth over the next 30 years. ये अनुमान है कि आने वाले 30 years में इंडो पैसिफिक है जो वो ग्लोबल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला रीजन होगा. So therefore, US is eyeing on this region, and US wants, you can say, to push away China from this region. It is designed for shared realities that are commonly faced, such as climate change, supply chain disruptions, transforming into a digital economy, and the need for a better coordinated high-tech manufacturing economy. सो ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये इस रीजन में जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उनकी जो शेयर्ड रियलिटीज़ हैं, कॉमन रियलिटीज़ हैं, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए डिजिटल इकोनॉमी, नीड फॉर ए बेटर कोऑर्डिनेटेड एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. सो ये सभी की ज़रूरत है. सो ये उसके ऊपर बेस करता है, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए है. सो दैट इज़ वाई इट्स सिग्निफिकेंस कैन बी सीन फ्रॉम दिस एंगल आल्सो. It will help reduce dependency on China for the supply of critical components and minerals such as semiconductors. Okay. So as I have already told that 85% of the global supply of rare earths is sourced from China only, and China and Russia are the major suppliers of the critical minerals. Okay. And similarly, as far as the semiconductor industry is concerned, so Taiwan is a very much advanced player in the semiconductor industry, and many firms from Taiwan have already invested in China in the manufacturing of semiconductors. So that is why चाइना के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है इन चीज़ों के लिए वो कम करनी है, वो रिड्यूस करनी है और डाइवर्सिफाई करना है चाइना से. सो दिस इज़ द नीड. चाइनाज रिएक्शन टू द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. पहला रिएक्शन क्या है कि चाइना ने ये बोला है कि ये यूएस की एक अटेम्प्ट है इस रीजन में डिवीज़न एंड कॉन्फ्रेंटेशन क्रिएट करने की. चाइना सेड दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक नेटो. तो जैसे नेटो का पर्पस था टू चेक द expansion of the Soviet Union. Okay? And similarly, the purpose of Indo-Pacific Economic Framework is to check or counter the economic expansion of China. That is why China has headed an economic NATO. Okay? So China will work with Asia-Pacific countries to implement the Global Security Alliance. So China कहता कि हम भी आगे बढ़ेंगे, एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ को लेके हम भी काम करेंगे, हम भी जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो चाइना वॉर्न्ड अगेंस्ट फॉर्मिंग मिलिट्री ब्लॉक्स इन द रीजन. तो चाइना कहता है कि इस रीजन के अंदर मिलिट्री ब्लॉक्स की फॉर्मेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा. दिस रीजन मीन्स इंडो पैसिफिक रीजन. वाई? बिकॉज there is one term that is Quad. Quad is a security dialogue among 4 countries, that is US, India, Japan and Australia. So Russia and China Quad को देखते हैं कि ये एक नेटो की तरह एक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि इमर्ज हो रहा है. तो उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक मिलिट्री अलायंस या एक मिलिट्री ब्लॉक बन के डेवलप हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई चाइना इज़ वेरी मच एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग दिस आल्सो. एंड if we note that if we note seriously, Indo-Pacific Economic Framework
is joined by all the four Quad countries, and America is the major driving force in the Quad, and America is the major driving force in the Indo-Pacific economic framework also. So ये चाइना मानता है कि ये क्वाड की ही एक एक्सपेंशन है एक नई दिशा में इकोनॉमिक डायमेंशन में. सो दैट इज वाई वो ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ग्रेजुअली जो यूएस डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी एसोसिएशन इंक्रीज करके और यहाँ एक सिक्योरिटी अलायंस फॉर्म करेगा. सो दैट इज़ वाई चाइना ने ये वार्न किया है. चाइना हैज़ reiterated its commitment to the peaceful settlement of disputes through dialogue and consultation. Retreat to say something again and again. So चाइना ने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि चाइना कमिटेड है जो भी डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या इस रीजन के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी पीसफुल सेटलमेंट के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड कंसल्टेशन. चाइना प्रॉमिस टू मेंटेन ग्लोबल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक. सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किस चीज़ की बात करता है? सप्लाई चेन रेजिलियंस. सो चाइना कहता है कि हम भी रीजनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, मेंटेन करेंगे और हम एशिया पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट को हम इन्हांस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. चाइना विल कीप ऑन प्रमोटिंग क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, इंटरकनेक्शन एंड कनेक्टिविटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो चाइना कहता है कि हम जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाइना कहता है कि वो हमारा जारी रहेगा. एंड एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना विल इंक्रीज कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्शन also. So this is in reaction to the Indo-Pacific economic framework that China has stated. China warned against the dilution of the concept of Asia Pacific and the disturbance to cooperation in the region. So China कहता है कि एशिया पैसिफिक का जो कंसेप्ट है इसको आप इंडो पैसिफिक का नाम दे करके डाइल्यूट मत करो, बिकॉज रशिया भी ये नहीं चाहता कि इसको इंडो पैसिफिक नेम दिया जाए. रशिया भी चाहता है कि इसका नेम एशिया पैसिफिक हो और चाइना भी यही चाहता है कि there should be no effort to dilute the concept of the Asia Pacific and any type of disturbance to the cooperation in the Indo-Pacific region or Asia Pacific region would not be tolerated according to China. So next is China considers the formation of Indo-Pacific economic framework a US strategy to restrict China. ये हम पहले बात कर चुके हैं. China expressed doubt over the success of the Indo-Pacific economic framework, as according to China, the countries may not be able to bear the cost of decoupling with China. So, China कहता है कि Indo-Pacific economic framework की जो सक्सेस है वो अपने आप में डाउटफुल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना कि जो वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द Indo-Pacific region is fully associated with China, and in that case if any country would try to decouple or deassociate its economy from China, so the cost of that decoupling would be more than the benefit the country would gain by joining the Indo-Pacific economic framework. So that is why China ये कहता है कि जो डीकपलिंग की जो कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हुए चाइना ये नहीं समझ रहा कि कंट्रीज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को प्रेफर करेंगे, राइट. सो डीकपलिंग मीन्स जैसे आज इंडिया की इकोनॉमी है, सो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है. सो चाइना इंडिया चाइना के साथ जो है अमेरिका से भी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है आज के डेट में. सो अगर इंडिया
चाइना से डी एसोसिएट होता है, अपनी इकोनॉमी को डीकपल करता है, so then India will have to look for other sources, okay, for trade purposes or other suppliers, okay. तो जो ये चाइना से ले रहा है उनके इसको अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। तो वो अल्टरनेटिव इसको कब मिलते हैं, मिलते भी हैं या नहीं मिलते, और वहाँ से जो सप्लाई है उसकी सस्टेनेबिलिटी का इशू रहेगा, एंड कॉस्ट ऑफ you can say sourcing the things from that new alternative of China. So uh, there are so many things, so that is why चाइना कहता है कि किसी कंट्री की हमारे ऊपर मतलब डिपेंडेबिलिटी ही इतनी बन चुकी है कि अगर वो यू कैन से चाइना से डिसएसोसिएट होना चाहेगा तो उसमें उसको रिस्क लगेगा। सो दैट इज़ वाई चाइना का ये कहना है कि इसकी जो सक्सेस है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वो डाउटफुल है। तो नेक्स्ट इज China said it will increase funding support to global development initiatives. सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रिएक्शन में चाइना ने बोला है कि हम जो फंडिंग सपोर्ट है वेरियस ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए वो हम इंक्रीज करेंगे आने वाले दिनों में, सो दैट यूएस को जो है स्पेस ना प्रोवाइड की जाए, बिकॉज चाइना's पॉकेट्स आर डीपर देन दोज ऑफ द यूएस टुडे। यूएस इज नॉट able to afford that much investment today which China can, so that is why China है जो वो अपना जो पैसे का इन्फ्लुएंस यूज़ करके तो वो चाहेगा कि यूएस को यहाँ ग्राउंड ना मिल पाए। सो प्रमोट ए न्यू प्रोजेक्ट बैंक, सो चाइना सेड दैट आने वाले दिनों में इट विल प्रमोट ए न्यू प्रोजेक्ट बैंक एज वेल, implement Asia Pacific Trade Agreement, work on Trans-Asian Railway Network and other major projects, expedite the progress of its talks with ASEAN countries on their disputes in the South China Sea to reach a long-awaited agreement on a code of conduct for waters. Okay? So South China Sea is a bone of contention because South China Sea में एक 9 लाइन है जो यू शेप्ड है, वो आप देख लेना, गूगल करके देख लेना। सो विद इन दैट 9 लाइन which constitutes about 90% territory of the South China Sea that is claimed by China. But there are other littoral states as well, like Philippines is there, Brunei is there, Malaysia is there, and that Vietnam is there, Taiwan is there. So those countries you can say also claim the territories in the various islands in the South China Sea. But the dispute with China is that China does not accept the claims of other littoral states over the territories in the South China Sea. So in that context, the China has said that जो भी आशियन कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बात की है मलेशिया की, आपका ये ब्रुनाई की, फिलीपींस की, वियतनाम की, ये सभी आशियन कंट्रीज़ हैं। तो चाइना कहता है कि जो भी साउथ चाइना सी को लेकर के डिस्प्यूट हैं आशियन कंट्रीज़ के साथ, सो चाइना उनके साथ एक एग्रीमेंट यू कैन से वर्कआउट करने की कोशिश करेगा, ताकि जो ये समुंदर है इसके लिए, साउथ चाइना सी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जा सके आने वाले दिनों के लिए। सो बेनिफिट्स टू इंडिया, सो अब तक हमने किया है कि चाइना का रिएक्शन क्या था, तो अब इंडिया को इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इंडिया ने एक अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि हम अपने जो ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, वी विल फोकस ऑन दोज कंट्रीज एंड बाय ओपनिंग द ट्रेड विद दोज कंट्रीज इंडिया कैन gain a lot. Okay, so that is why ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, सो ये एक अपॉर्चुनिटी देगा इंडिया को अपने ईस्टर्न नेबर के साथ एंगेज करने की, सो जिससे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बूस्ट मिलेगा। इट इज़ बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया
to counter China's growing influence in the Indo-Pacific region. सो चाइना का जो हम इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस देख रहे हैं या इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में, because as you might have heard that China is encircling India by its string of pearls policy. Okay, and similarly, China's increase or China's increased activities in the South China Sea are also a threat to India, because a large volume of Indian trade crosses through the South China Sea. Similarly, that of US trade also. Okay, so that is why. So जो भी जब चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में इंक्रीज होगा तो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ठीक नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई इंडिया को ये बेनिफिट है कि अगर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अगर चाइना को एंगेज करता है तो दैट विल गो इन बेनिफिट ऑफ इंडिया. तो ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक विल बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द रीजन, सो जिसका इंडिया को बेनिफिट मिलेगा. Reducing reliance on China for essential imports by de-risking supply chains will benefit India also. सो जैसे हमने कहा है कि जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह को लेकर के जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर क्या है कि हम डाइवर्सिफाई करें, हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस करें. सो अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस करने की बात आती है तो ऑब्वियसली उसका गेन इंडिया को मिलेगा, बिकॉज इंडिया उसी रीजन के अंदर बैठा है. ओके, जैसे कि अभी ताइवान की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज़ आई थी कि ताइवान इज़ प्लानिंग कि चाइना में से अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को शिफ्ट करके वो मतलब इंडिया में ले आए, बिकॉज ताइवान doesn't have good relations with China as on today we know. So that is why. So there is something to gain for India. It will provide a boost to India's service trade as well. So next, India joined Indo-Pacific Economic Framework, not the Regional Comprehensive Economic Partnership. Why? What is the reason? So by joining Regional Comprehensive Economic Partnership, there was a threat to local producers in India, okay, of circumvention of rules of origin due to tariff differentials, of a flood of cheaper Chinese goods in Indian markets, to the dairy industry and Indian food markets from producers from Australia and New Zealand. So question है कि इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया बट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया है, ऐसा क्यों? सो ये कहते हैं कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें चाइना भी था, चाइना भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें न्यूजीलैंड भी है. ओके, सो इंडिया को एक ये थ्रेट था कि विदाउट प्रॉपर सेफ गार्ड्स, राइट, सो अगर इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है तो चाइनीज़ गुड्स में फ्लड इनटू इंडिया, एंड जिससे क्या होगा कि इंडिया के लोकल प्रोड्यूसर को बहुत भारी नुकसान होगा. ओके, बिकॉज चाइनीज़ गुड्स आर कंपैरेटिवली चीपर देन द इंडियन गुड्स, सो दैट इज़ वाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एबल टू compete China in terms of the cost of manufacturing. Okay, so that is there. And similarly, as far as the dairy industry is concerned or India's food markets is concerned, because Australia and New Zealand are known for this, so that is why they would be able to provide cheaper dairy products and food products to India. Okay, so that would also harm the Indian producers, that is the farmers in India. Okay, so that is the reason. And circumvent of rules of origin due to tariff differentials. Okay, rules of origin क्या होता है कि यूजुअली सभी जो ऐसी इकोनॉमिक
जो एसोसिएशंस होती हैं उनके अंदर रूल्स ऑफ रीजन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर। सो मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया लेट सपोज इंडिया का थाईलैंड के साथ जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो इसमें क्या है कि थाईलैंड से आने वाली गुड्स के ऊपर जो इंडिया है वो ज़ीरो टैरिफ चार्ज करता है। ओके। सो बट दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइना, चाइना के साथ इंडिया की ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो चाइना से जो गुड्स डायरेक्ट आती हैं इंडिया में, लेट्स सपोज उसके ऊपर इंडिया 2% ड्यूटी चार्ज करता है, टैरिफ चार्ज करता है। ओके। सो देन चाइना का लेकिन थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो जो गुड्स चाइना से थाईलैंड में आती हैं उसके ऊपर ज़ीरो ड्यूटी चार्ज की जाती है। सो देन अगर चाइना 100 रुपीज़ की चीज़ डायरेक्टली इंडिया को भेजता है तो उसमें 2 रुपीज़ टैरिफ लगेगा, दैट विल कॉस्ट 102। बट इफ चाइना would send it through this Thailand, so then zero tariff, so 100 की जो है आर्टिकल वो इंडिया में 100 में ही सप्लाई हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई चाइना में misuse this, you can say, this uh, association of India with Thailand in terms of the free trade agreement. Okay? So that is why सभी के सभी जो ऑलमोस्ट सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर एक रूल्स ऑफ ओरिजिन की एक क्लॉज होती है जिसमें ये डिस्क्लोज करना होता है कि जो आर्टिकल थाईलैंड से इंडिया आ रही है तो उस आर्टिकल का ओरिजिन कहाँ हुआ है, वेदर इट इज़ इन थाईलैंड और इट इज़ इन चाइना। अगर वो ओरिजिन चाइना में है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर वो ओरिजिन थाईलैंड में है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट। ओके। सो नेक्स्ट इज the above threats don't exist if India joins the Indo-Pacific Economic Framework because it is optional for India to join under any pillar. So first thing is that it is not mandatory for India to join the trade pillar. One is that. And second, Indo-Pacific Economic Framework is not a free trade agreement. So that is why जो रिस्क इंडिया को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में थे वो रिस्क इंडिया को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में नज़र नहीं आ रहे। दैट इज वाई इंडिया ने उसको छोड़कर इसको ज्वाइन किया है। सो इंडियाज रिस्क ऑफ ज्वाइनिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फर्स्ट इज द डेटा सिक्योरिटी। So India is very much concerned with the data security, very much sensitive to the data security. Usually जब कोई भी ऐसे एग्रीमेंट्स के ऊपर बात चलती है तो इंडिया की एप्रीहेंशंस डेटा सिक्योरिटी को लेकर के रहती है। सो यहाँ भी क्या है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा की बात है। सो डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी रहेगा। चाइना फैक्टर, China is a neighbor of India. China is an important trading partner of India. And uh, you can say Indo-Pacific Economic Framework is led by the US, in which India is a member. And China doesn't have good relations with the US. So therefore, India's increased indulgence in US-led initiatives may widen the gap between India and China, which may be harmful or which may be strategically not good or diplomatically not good for India. So this is the point here. Similarly, Russia factor. Okay, so in the wake of the Ukraine-Russia war, the gap between the Western world and Russia has increased, between the US and Russia particularly we can say has increased. So Russia is also not in favor of the Quad or Indo-Pacific Economic Framework. So but Russia is an important trade partner of India, defense supplier of India also, and it is a time-tested friend of India also. So another risk is that
If India indulges more in US-led initiatives, so then its relations with Russia may turn, you can say, sour or may be undermined. So foreign policy related, because आज तक जो इंडिया की पॉलिसी रही है तो वो रही है दैट इज द you can say to remain neutral in the international matters. Okay, so non alignment, ये इंडिया का प्रिंसिपल रहा है. लेकिन आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं कि इंडियाज इंडल्जेंस इन द यूएस लेड इनिशिएटिव्स इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल क्वाड, नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एंड क्वाड के अंदर एक जो इनका एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सो उसमें भी इंडिया रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि इससे क्या है, इंडिया का जो एक न्यूट्रल कंट्री का जो स्टांस है, परहैप्स उसको थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो आंच आएगी और उसके ऊपर डाउट रेस होगा, उसकी तरफ फिंगर रेस होगी. दो इंडिया एवरी पॉसिबल जो है कोशिश करता है कि इसका जो न्यूट्रल स्टांस है वो कायम रहे. जैसे अभी जैसे दैट IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में जो अभी जो ईरान के अगेंस्ट जो एक रेजोल्यूशन आया था, वहाँ भी इंडिया एब्सेंट रहा है, इंडिया ने वोटिंग नहीं की. सो अपना न्यूट्रल स्टांस शो किया है. इवन यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान भी रशिया के अगेंस्ट यूएन में कुछ रेजोल्यूशन आए, सो इंडिया ने एब्सटेन किया. सो इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स न्यूट्रल स्टांस, बट फिर भी उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. सो डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज टू इंडिया. ओके, सो इंडिया is a big advocate of the UN reforms. Okay? So इंडिया चाहता है कि यूएन में रिफॉर्म्स हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो, एंड इंडिया अपने आप को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट जो मेंबरशिप का क्लेम करता है विद वीटो पावर. सो और वी नो दैट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल there are 5 permanent members, okay, with veto power. That is US and France is there, okay, China is there, Russia is there, and UK is there. Okay, so these are the 5 permanent members in the UN Security Council. So इन 5 में से 2 चाइना एंड रशिया हैं. okay? so अगर इंडिया की जो एसोसिएशन अमेरिका के साथ इंक्रीज होती है, तो कल को जब कोई ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया का जो कैंडिडेचर है वो कंसिडर किया जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, सो डेफिनेटली रशिया एंड चाइना इसको अपोज कर सकते हैं. सो ये एक डिप्लोमेटिक डिफीट हो सकती है इंडिया के लिए. सो नेक्स्ट इज limitations of the Indo-Pacific economic framework. So first limitation is that it is too much US centric. So ज़्यादा US centric होने की वजह से बहुत सारे एरियाज में जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं those may feel uncomfortable. This is the one point. Second is ASEAN nations are very much interconnected with China. Therefore, the success of Indo-Pacific economic framework is doubtful. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि the economies of this ASEAN nations are very closely linked with China, and China is you can say economically stronger country. So that is why various countries of the Indo-Pacific region depend on China for their financial needs or for their developmental needs or so. So and trade is definitely, and that is why. So जब इतनी क्लोज एसोसिएशन है चाइना के साथ इन कंट्रीज की, सो ऐसे में ये जो मेंबर्स हैं जो दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी मेंबर हैं और आसियान में भी हैं, जो 7 एशियन कंट्रीज़ की हमने बात की थी. दैट इज़
Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei एंड फिलीपींस एंड वियतनाम। ओके, सो ये 7 कंट्रीज जब इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं चाइना के साथ, तो वो इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में वो कैसे रोल प्ले करेंगे, कितना एक्टिव रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे। सो ये सब एक क्वेश्चन है। So experts see the Indo-Pacific economic framework as nothing more than Barack Obama's pivot to Asia in a new form. Okay, so 2011 में बराक ओबामा ने एक पाइवट टू एशिया पॉलिसी बनाई थी। उसका मेन पर्पस था टू कंसंट्रेट मोर ऑन एशिया। ओके, सो बाद में वो ट्रम्प के टाइम में आकर के उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही, और जो अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, जो पाइवोट टू एशिया पॉलिसी बनाई थी बराक ओबामा ने, सो ये उसी का एक नया रूप है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज़ वेरी मच टेंटेड बाय द यूएस जियोपॉलिटिक्स। सो वो कहते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर हम यूएस की जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से चाइना के ऊपर टारगेट इसको कर रखा है। ओके, बट ये रीजनल इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझ नहीं रहा कि चाइना जो है वो वेरी मच डीपली एंट्रेंचड इनटू द रीजन। सो दैट इज़ वाई कंट्रीज को चाइना से सेपरेट करना, डीकपल करना, ये एक रियली बिग चैलेंज है। सो इन दिस सेंस यहाँ ये कहने का पर्पस है कि ये प्रैक्टिकल काम है, और ये एक तरह का मतलब कि एम्बिशियस प्लान है यूएस का, जिसमें यूएस जियोपॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है। नेक्स्ट, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डज नॉट येट हैव एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो पहले ही हमने बात कर ली है कि जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड और बहुत सारे जो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ऐसी इकोनॉमिक एसोसिएशंस होती हैं, सो उनके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ज़रूर होता है, लेकिन इसके अंदर अभी तक नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या रहेगा। So it seems imposing obligations on member countries without providing incentives such as reducing trade barriers on providing market access. Okay, so इसमें क्या है, इसमें जो कैरेट एंड स्टिक नहीं है, इसमें विन विन सिचुएशन ये नहीं क्रिएट करता, ये विन लूज सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें अमेरिका विनर रहेगा और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लूजर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहते कि इसमें कंट्रीज के ऊपर सिर्फ ऑब्लिगेशंस ही इम्पोज की गई हैं, लेकिन उनको उस ऑब्लिगेशन के बदले में कोई रिवार्ड या कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। ओके, जैसे कि अगर हम ट्रेड बैरियर्स को लोअर कर देते, मार्केट एक्सेस दे देते, तो क्या था, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे उनको बेनिफिट होना था। तो अभी तक तो इसके अंदर सिर्फ ऑब्लिगेशंस ही नज़र आ रही हैं। Next, decoupling of the Indo-Pacific Economic Framework members from China-centric global commerce is a challenge because all Indo-Pacific Economic Framework members have China as their trading partner. So ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है decoupling वाला पॉइंट। So limitations of the Indo-Pacific Economic Framework में next है, Indo-Pacific Economic Framework excludes several countries such as Cambodia, China, Laos, Myanmar एंड ताइवान। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसमें से बहुत सारे कंट्रीज को एक्सक्लूड कर रखा है। सो दैट इज़ वाई जो इसकी सक्सेस है या जो काउंटर रिएक्शंस हैं तो वो कैसे रहेंगे आने वाले दिनों में। सो ये अपने आप में एक बिग क्वेश्चन है। एक्सक्लूजन ऑफ चाइना फ्रॉम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विल इंक्रीज चाइना यूएस राइवलरी which is not good for the region, even not good for India also. The Indo-Pacific Economic Framework does not provide any alternative to China in the region as the US avoids more FTAs now. See, चाइना का अल्टरनेटिव मीन्स कि चाइना के ऊपर जैसे डिपेंडेबिलिटी इन सभी कंट्रीज़ की बन चुकी है, सो अगर हम इन कंट्रीज़ को चाइना से सेपरेट करना चाहते हैं, चाइना से डीकपल करना चाहते हैं, तो हमें उन कंट्रीज़ को चाइना का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा जो चाइना की तरह उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, जो चाइना की तरह
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनकी सपोर्ट कर सके, जो चाइना की तरह उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टनर बन सके, जो चाइना की तरह उनको जो ट्रेड में सपोर्ट कर सके, तो हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट यूएस इज़ नॉट इन पोजीशन टू बिकम अल्टरनेटिव ऑफ चाइना इन ऑल दीज थिंग्स, सो दैट इज़ वाई ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। So bringing together highly heterogeneous countries with high standard commitments to a digital economy, clean energy and green infrastructure seems a Herculean task. So देखो बात यह है कि ये जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली इनमें से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो उनके लिए एकदम स्विच ऑफ करना या स्विच करना क्लीन एनर्जी के ऊपर, दैट इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल टू दोज कंट्रीज बिकॉज दे आर नॉट इन पोजीशन टू अफोर्ड दैट। ओके, एंड सिमिलरली जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जो हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, ये अभी इन सभी कंट्रीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वाई एंड मोर ओवर ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंपल्शंस हैं। तो दैट इज़ वाई दीज आर द हेट्रोजीनियस कंट्रीज़। और ऐसे सिचुएशन में सभी कंट्रीज़ को एक कॉमन स्टैंडर्ड कमिटमेंट्स के अंडर लेके आना, सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी यू कैन से हार्ड जॉब। सो लेट अस सी आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट क्या रहेगा। So next is various labor and environmental standards that the Indo-Pacific Economic Framework seeks to incorporate are highly unpopular in the region. So इसमें जो हम बात करते हैं लेबर स्टैंडर्ड्स की, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की, सो ये अभी तक तो एक्सेप्टेबल नहीं है इन कंट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया को भी अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात होती है किसी इकोनॉमिक एसोसिएशन में, सो इंडिया यूजुअली वहाँ से या तो विदड्रॉ कर लेगा या इंडिया को वहाँ ऑब्जेक्शन रहता है। सो दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन में क्या इनके ऊपर कोई जो सहमति बन पाएगी, कंसेंसस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सो ये भी एक है बात। नेक्स्ट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट गोइंग टू हैव कंग्रेशनल अप्रूवल। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कांग्रेस के सामने पुटअप नहीं किया जा रहा। कांग्रेस मीन्स अमेरिकन पार्लियामेंट के सामने पुटअप नहीं किया जा रहा। सो दैट इज़ वाई जब तक इसको कांग्रेस की अप्रूवल नहीं मिलती तब तक इसका जो स्कोप ऑफ कमिटमेंट है तो वो बहुत लिमिटेड रहेगा, मिनिमल रहेगा। और जैसे ही यू कैन से बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा, बाइडन की जगह पे कोई दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे, मान लीजिए दोबारा फिर ट्रंप आ जाते हैं, तब इसका जो फ्यूचर क्या रहेगा दैट इज़ रियली डाउटफुल। सो दिस इज़ द पॉइंट दिस रिस्पेक्ट। सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन is weaker and more vulnerable without Taiwan giving the importance of its advanced semiconductor industry to global value chains. Okay? So as I have already discussed that Taiwan is a major manufacturer of the semiconductors and it has very advanced technology in this respect. So that is why Taiwan को हमने इसमें से बाहर रख दिया है। So that is why जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स की, सो वो वल्नरेबल रहेगी जब तक हम ऐसे मेजर प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं करते। सो दो द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज मेड टू रेजिस्ट चाइना इन द रीजन, most of the Indo-Pacific Economic Framework countries already have free trade agreements with China, either through the ASEAN-China FTA, means ASEAN-China Free Trade Agreement, or the रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये कहते कि एक तरफ हम रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम आशियन ले लेते हैं। रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर 15 कंट्रीज़ हैं, तो उन 15 कंट्रीज़ में से हम ये जापान ले लेते हैं, साउथ कोरिया ले लेते हैं, एंड हम ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, न्यूजीलैंड ले लेते हैं। सो ये सभी कंट्रीज़ हैं जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी हैं।
और जो आशियन के भी 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हैं। ओके, सो उन सभी कंट्रीज़ का, तो चाइना इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द आशियन, बट उन सभी कंट्रीज़ का आशियन के थ्रू चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपने आप में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो दैट इज़ वाई रीजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू जापान का, साउथ कोरिया का, मलेशिया का, सिंगापुर का, दैट इज़ ब्रुनाई का, वियतनाम का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इन सभी का चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो दैट इज़ वाई एक तरफ हम चाइना को रेजिस्ट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसमें जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड यूएस को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ किसी न किसी तरह आइदर थ्रू द आरसीईपी और थ्रू द आशियन चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं। सो देयरफॉर ये एक ये एक यू कैन से एक बड़ा एक पैराडॉक्स सा लगता है कि ये क्या है। ओके, सो दैट इज देयर। सो नेक्स्ट इज this Indo-Pacific economic framework is geopolitical win for the US. सो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को कंक्लूड करना, लॉन्च करना, इसको इसकी फॉर्मेशन को अनाउंस करना, ये अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल विन मानते हैं। कैसे इसको जियोपॉलिटिकल विन मानते हैं फॉर अमेरिका? वन इज inclusion of India in its signatories will make the Indo-Pacific economic framework distinguished from the regional comprehensive economic partnership and this comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership, as India is not a partner in both. तो ये एक अमेरिका की अपने आप में अचीवमेंट है कि भारत जो कि इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है, एक मेजर इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, फास्टली ग्रोइंग इकोनॉमी है, सो ये कंट्री ना तो आरसीईपी का मेंबर है, ना सीपीटीपीपी का मेंबर बना है, लेकिन भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मेंबर बनने के लिए यस कर दिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है। सो ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, एक जियोपॉलिटिकल विन है अमेरिका की। एंड ये अपने आप में एक मैसेज कन्वे करता है कि इंडिया इज़ क्लोजर टू अमेरिका देन चाइना और एनी अदर कंट्री। ओके, सो इसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। Second, South Korea's inclusion is an achievement of the US because South Korea has so far remained absent from the pan Indo-Pacific effort to strengthen any rule-based order in the region. तो ये कहते हैं कि अब तक अगर कोई पैन इंडो पैसिफिक एफर्ट हुई है जिसका पर्पस इस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना हो, तो ऐसी किसी एफर्ट में अब तक साउथ कोरिया की इंक्लूजन नहीं देखी। लेकिन अब पहली बार हुआ है कि साउथ कोरिया भी इसमें इंक्लूड है। सो ये भी एक यूएस के एक जियोपॉलिटिकल विन है, और ये अपने आप में ये मैसेज कन्वे करता है कि इंडिया इज़ विद यूएस, South Korea is with US in this region, and South Korea is a very important country, seeing its economic development and seeing its strategical position in that region. So that's why. So Indo-Pacific Economic Framework is the first framework where Japan and South Korea will work together in the Indo-Pacific context. Very much important point, because relations between Japan and South Korea are not smooth or not good. So that is why किसी ऐसे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, रीजनल प्लेटफॉर्म पे जापान एंड साउथ कोरिया दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में इंक्लूड कर लेना, सो ये भी एक यूएस के लिए एक विक्ट्री है, एक विन है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो आरसीईपी में भी हैं दोनों कंट्रीज, ओके, बट चलो फिर भी कि ये जापान एंड साउथ कोरिया दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, ये भी अपने आप में ये प्रूव करता है कि आने वाले दिनों में स्कोप इज़ देयर दैट
इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो परहैप्स वो रिसॉल्व हो जाएं। एंड मोर ओवर जापान, साउथ कोरिया, इंडिया का जो इस यूएस के साथ जो एसोसिएशन है, एंड मोर ओवर स्ट्रेट ऑफ मलाका को देखते हुए हम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया का जो यूएस के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में एसोसिएशन, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है इसको। So, all the US security treaty allies. Yes, I would like to explain here that the Strait of Malacca is a very strategic, narrow maritime route. Okay, this is a choking point between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Okay, so that is why अगर जो अगर यूएस का इन्फ्लुएंस स्ट्रेट ऑफ मलाका के आसपास बढ़ता है तो that will be a threat to China, and that is good for the US because China का जो very large volume of trade है, जो even the energy supplies also those pass through the Strait of Malacca. So all the US security treaty allies, Australia, Japan, Philippines, South Korea and Thailand are Indo-Pacific Economic Framework signatories. Okay. So यूएस का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, थाईलैंड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, सिक्योरिटी ट्रीटीज साइन हो चुकी हैं। सो इन सभी कंट्रीज़ का जो कि यूएस के सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, सो उनका एक ही प्लेटफॉर्म पे यूएस के साथ आकर के यू कैन से बैठ जाना। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि सिक्योरिटी एग्रीमेंट प्लस इकोनॉमिक एग्रीमेंट, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, सो दिस इज ए वेरी significant in itself. Okay, so this is all about this lecture today, which is the Indo-Pacific Economic Framework. So आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके जो 4 पिलर्स या मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका अमेरिका को क्या बेनिफिट रहने वाला है, इसका इंडिया को क्या बेनिफिट रहने वाला है, क्या ये फ्री ट्रेड है या नहीं है, इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, और ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को हम यूएस के लिए एक जियोपॉलिटिकल विन कैसे देखते हैं। सो ऑल दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर in sufficient detail, I think. So I hope कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी। सो बाय फॉर नाउ, अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। स्टे हेल्दी, stay happy, all the best, and God bless you all. Bye.